Good morning, everyone. In this video, we'll discuss about what is relational database management system. This is our unit 3 and unit 3 relational database management system, and we'll discuss today chapter number 7 database management system. So the chapter number 7 is your database management system. So let us discuss what do you mean by database management system. So first, before going to database management system, we have to first discuss about what is database and what is the meaning of database. So first is from ancient time, man has keeping record of event in different forms and format, and information in respect of finance, scientific research, social parameter, and host of other has been maintained meticulously all over the world by killing personalities for future and immediate use. In our day-to-day life, we maintain diaries. Okay, a shopkeeper maintain its stock register or account book. The academic section of a college maintain the long roll register or tabulation register. Keep the in that register what is मतलब क्या रखते हैं? Keep the biodata and marks secured in various examination by the student and so on. So all students' records should be maintained by the college, and it are all they are keeping that records in some register. So we record this information manually on paper फॉर फ्यूचर यूज हम लोग पेपर में मैनुअली उसको रिकॉर्ड करते हैं फॉर फ्यूचर यूज एडवेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज मेड द टास्क इजियर लेकिन आजकल कंप्यूटर जमाने में ये सब इजी हो गया है पेपर मैनुअल हुआ बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड क्यों बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड्स एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज मेमोरी स्पेस क्योंकि हम उसको अगर कंप्यूटर में रखेंगे तो उसको इजीली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं उसका एक्यूरेसी बहुत करेक्ट होता है एंड जल्दी हमको अवेलेबल हो जाता है जब जल्दी मिल जाता है सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ तो पहले रजिस्टर और मैनुअली पेपर वर्क में रिकॉर्ड मेंटेन होता था लेकिन आजकल डिजिटल कंप्यूटर इसको बहुत इजी बना दिया तो हम लोग कंप्यूटर में अगर डाटा फिट कर रहे हैं तो उसको हम जल्दी एक्सेस कर पाते हैं और उसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी मतलब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है टू एक्सेस द डाटा so in computer, data are stored in various way. In computer, data are stored in two different way. क्या कैसे computer data को store करता है? First one is file-based system and another is database system. So there are two way in which a computer is stored data. One is file-based system and another is database system. In file-based, permanent record are stored in various files. In file-based system, permanent records are stored in various files, and one has to write or use various application program to add or extract record in appropriate file. तो पहले के कंप्यूटर में अगर हम लोग वेरियस डाटा को फाइल फॉर्मेट में रख रहे हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको डिफरेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे टू एक्सेस द फाइल मतलब वो फाइल से डाटा एक्सेस करने के लिए हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते थे और उसको यूज करते थे लेकिन हम अगर डिफरेंट एक फाइल के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ता है दूसरे फाइल के लिए दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है तो इट विल कॉस्ट मोर सो एज एप्लीकेशन नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीजेस ऑल्सो जब नंबर ऑफ फाइल इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर फर्दर स्क्रेप देयर काउंट सो दिस सिस्टम फेल सो ये जो हर एक फाइल जब फाइल इंक्रीज हो जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर भी हमको बार बार बनाना पड़ता है डिफरेंट टाइप का फाइल में डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर हमको एक्सेस करने के लिए बनाना पड़ता था सो दिस सिस्टम फेल्स टू इफेक्टिवली चेक द डुप्लीकेशन तो इसमें क्या होता था एक फाइल में एक डाटा है और दूसरे फाइल में भी वही सेम डाटा है लेकिन वो फाइल फॉर्मेट अलग है इसलिए फर्स्ट फाइल के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ता था दूसरा फाइल के लिए भी अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ता था लेकिन यहाँ फाइल 2 में जो डाटा है वो फाइल 1 में है तो सेम डाटा एक्सेस करने के लिए हम दो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो दो एप्लीकेशन प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं तो एक डाटा दो बार भी दिखा सकता है सो दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन सो दिस सिस्टम फेल्स इफेक्टिवली चेक द डुप्लीकेशन accuracy and integrity of data retrieval and security of information become less effective so this line is very important this system the file system fails to effectively check the duplication this is a disadvantage of file system this system fails to effectively check the duplication accuracy and integrity of data and retrieval and security of information becomes less effective so to minimize the limitation of a file based record keeping system the database approach is conceived. Initially, simple and flat database were in use. The information are arranged in row and column of a table. Look at the following tables.
So to minimize the limitation of file system, the database approach is convinced and initially simple and flat database were in use. The information are arranged in row and column of a table. So this is the structure of a database. So all the records are keeping in rows and column wise. So in the first rows, and this is your first row, first column. So this one is known as cell. In this cell, this is the attribute. Is your एक तो टेबल है database table student टेबल इसमें हम roll number name of the student date of birth address and telephone number 5 attributes we are keeping and the second row are the actual data. So this record, this is the record of a first student, Akash Acharya. So this is his roll number, name, that was his date of birth, his address and telephone number. So this is a complete record of this student. So this is in this total line, this total row is known as one record. The second line is also known as one record, and third line also known as one record. So in this data, in this student table, in this database, there are 3 records present, and this roll number, name of student, date of birth, address, and these are known as attributes. So next, another database example of another database student, sorry, subject table. So here another this roll number is repeated. So roll number, then subject क्या क्या subject बोल लिया था computer 1, computer 2, elective 1, elective 2, elective 3, elective 4. So this student, this is your roll number is based on the student that is आकाश आचार्य ये जो roll number है यहाँ पे भी repeat है IA 15001 तो आकाश आचार्य क्या क्या सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश MIL हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड IT एंड सेकंड वन इज विशाखा सोरेन ये इसका रोल नंबर है IA 15002 ये क्या क्या सब्जेक्ट ली है कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 इलेक्टिव 1 इलेक्टिव 2 इलेक्टिव 3 इलेक्टिव 2 so English MIL political science logic education and science, statistics. So here in these two database what is the common attribute roll number is the common attribute. So we can by using these two database by using the roll number we can access this record as well as this record means complete record of Akash Acharya we can find by using these two database. So next is mark table. In this mark table there are 7 attributes roll number marks 1 marks 2 marks 3 mark 4 marks 3 and marks 4. So this one is the Akash Acharya. This record is marks of Akash Acharya in every subject, and this is the records of Visakha Soren. These are the marks of Visakha Soren in every subject. So we can access using roll number. We can access the Vikas Soren detail address and his roll number accordingly by using these two database. So another database, this is book table here, book ID, book name. This is a separate database here. All the book ID, book name, price, and publisher ID is stored. So this is the book ID, this is the book name. So different book ID, book name, price, and publisher is written in record wise. Next, another database is publisher table, publisher ID, publisher name, publisher address, and publisher telephone number. So here also different records are stored. So likewise, book issue table. So issue date, roll number, book ID, return date. So these are the all records. So in all practical purposes, databases are being maintained in various sectors like large, small business houses, academic and research institute, police organization, local civil bodies, and many other public and private sector units. Almost all e-commerce site use a database to store product inventory and customer information. Databases are composed of related table, while tables are composed of row and column. The first row describes the type of information to be stored under different column, and subsequent row hold the actual information in the sixth table. So here information has been recorded as part of specification of the column, having information stored in a column. So generally called a field represents specific attribute of the entities. Each row hold the information of one entity called record or tuple. So this is one record, or you can say the record or a tuple, and these are the attribute of the table, attribute of the database, student, roll number, book ID. These are the attributes, and इंफॉर्मेशन स्टोर इन ए कॉलम सो जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर है इसको बोलते हैं फील्ड वन फील्ड सो as such a field is the smallest unit of record in a database so each cell is known as field so roll number birth date address and publish etc are some of the field name in the above table field are specified by fields are specified by field name given to the field. Data type it specified types of data for each data item in the table and field size
अमाउंट ऑफ स्पेस रिजर्व फॉर स्टोरिंग द डाटा। सो यहाँ पे जो हम एक तो फील्ड डिफाइन करेंगे, हम उसका नेम डिफाइन करेंगे, उसका डाटा टाइप डिफाइन करेंगे। सपोज रोल नंबर इज ए फील्ड, सो इसका हम फील्ड नेम जो रोल नंबर दिए है उसका डाटा टाइप सपोज मैं कुछ भी इंटीजर और कुछ दे सकते हो, और उसका साइज मतलब कितना टोटल साइज उसका स्पेस होगा। So an entity is an object which may have a logical or physical existence, that is a place, person, or an organization. Each entity has certain property or attributes associated with it and operation applicable to it. Type and instance are two important terms related to entity. An entity type refers to the object which share common properties, students, that is students or course, etc. So these are the student course. These are some entities. An entity type usually denote in uppercase letter. An entity instance is a specific person or organization, etc. For example, Akash and textbook video Bodisa are the instance of student. So students का instance है आकाश and publisher का instance है textbook video Bodisa. So एक जो specific data होता है attribute का, that is known as your entity. So while storing the information on the different field, care must be taken that data is accurate and as per the real world value. Otherwise, one may enter uh, 31 Feb 2016 on the date as color. So next is what is data type. एक तो field हम जब define करते हैं तो data type भी define करना जरूरी है। So what do you mean by data type? So look at the data table shown earlier. जैसे हम data table हमने discussion किया, each column hold data of a particular type. Suppose birthday column, birthday is birthday of a student table. So issue date is an issue table store only data value. So यहाँ पे हम लोग कैसे डेट देते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, डेट मंथ एंड ईयर। सिमिलरली टेलीफोन नंबर फील्ड इन स्टूडेंट टेबल एंड सी मार्क्स वन इन मार्क टेबल होल्ड ओनली नंबर वैल्यू। सो टेलीफोन नंबर मार्क यहाँ पे नंबर वैल्यू हम लोग देंगे। सो we shall now discuss different types of data which are in use to populate the database. So हम in this topic we will discuss some different data type of the field। मतलब जो data type हम लोग define करते हैं, जैसे कि बर्थडे ऐसे यहाँ पे भी बर्थडे डेट मंथ एंड ईयर होता है। देन इशू डेट, कोई भी डेट जैसे डेट मंथ एंड ये फॉर्मेट में हम लोग देते हैं। लेकिन टेलीफोन नंबर मार्क्स हम इसको नंबर में देते हैं, तो उसका डाटा टाइप क्या होगा। सो फर्स्ट द इन जनरल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाटा। First is text or character. So here all type of characters, that is letter, number, special character, all type of character जो कीबोर्ड में जितना सारा कीज है, all these are all character, all type of characters इसमें नंबर है, लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन द डबल कोट्स मार्क इज नोन एज कैरेक्टर स्ट्रिंग। सो ये सब आ जाता है टेक्स्ट और कैरेक्टर डाटा टाइप में। नेक्स्ट इज ए न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर विच कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर। सो जो नंबर को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से मैनिपुलेट कर पाते हैं, दैट इज उसका डाटा टाइप है न्यूमेरिक। देन डेट एंड टाइम, कैलेंडर डेट्स व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड मैथमेटिकली, कैलेंडर डेट्स व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड मैथमेटिकली, उसका डाटा टाइप होगा डेट एंड टाइम। एंड ट्रू और फॉल्स और यस और नो जो वैल्यू होता है उसका डाटा टाइप होगा लॉजिकल। So, what is a data type? A data type in a programming language defines specific characteristics for data to be entered in a field. Usually, a limited number of such data type built into a language package. The package specify a range of value for a given data type, processing of their values by the computer, and how they will be stored. In object-oriented programming, a programmer can create new data type to meet application need called as data abstraction. Such data type are based upon the built-in data type of the package, such as number, integers, and character. Languages that leave little room for programmer to define their own data type are said to be strongly typed. A strongly typed programming language is one in which each type of data, such as integer, character, hexadecimal, packed decimal, and so forth, is predefined as a part of the programming language, and all constant and variable defined for a given program must be described with one of the data type. So certain operation may be allowable only with certain data types. So the language compiler enforces the data typing and uses compliance. An advantage of storing data typing is that it imposes a religious set of rules on a programmer and thus guarantee a certain consistency of result. The disadvantage is that it prevents the programmer from inventing data type not anticipated by the developer of the programming language and its limit creativity of its user. So these are the data type. First one is
On numeric data, we are integer, short, long, byte, float, double, and character and boolean. For character, character, and yes, no, boolean are the data type. The first four data types store integer value, while the next two are store floating point value. So the integer, short, long, and byte have वो integer value store करता है. Then next float, double, यहाँ पे decimal point value store करता है. Then character and character data type is used for Unicode encoding scheme, and Boolean is for true or false value. Each data type occupies certain amount of memory space as defined by the developer, and other database packages uses the data types listed in the following table. So these are the data types. In this table, all the data types are listed here. So first one is, so this is your data type. MSSS, SQL Server, Oracle and MySQL. So this is Boolean. Boolean का वैल्यू होता है yes or no. उसका SQL सर्वर में वैल्यू स्टोर होता है बीट में, Oracle में बाइट में, MySQL में नल में. इंटीजर में डाटा टाइप इंटीजर, उसको किस टाइप का डाटा लेता है, नंबर टाइप लेता है और इंटीजर टाइप लेता है. उसका SQL सर्वर में डाटा टाइप होता है इंटीजर एंड Oracle में होता है नंबर एंड MySQL में इंटीजर और इंट होता है. नेक्स्ट डाटा टाइप इज फ्लोट. उसका होता है नंबर और सिंगल. इसका एसक्यूएल सर्वर में डाटा टाइप बोलते हैं फ्लोट और रियल. ओरेकल में बोल यू कैन से नंबर और माई एसक्यूएल में फ्लोट. देन करेंसी डाटा टाइप करेंसी, उसका एमएसएस करेंसी. एमएस एसक्यूएल सर्वर में बोलते हैं मनी एंड ओरेकल में बोलते हैं नॉन एंड माई एसक्यूएल में बोलते हैं null. So the next is data types is string fixed. This is a string. MS Access उसका बोलते हैं NA. SQL सर्वर में कैरेक्टर, Oracle में कैरेक्टर, SQL में भी कैरेक्टर, MySQL में भी कैरेक्टर बोलते हैं. The string variable MS Access में टेक्स्ट, SQL सर्वर में भरकर, Oracle में भरकर एंड MySQL में भी भरकर ही बोलते हैं. स्ट्रिंग टाइप डाटा को भरकर बोलते हैं. सो बाइनरी ऑब्जेक्ट, तो इसको MS Access ओएलई ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल सर्वर में बोलते हैं बाइनरी और बाइनरी एंड ओरेकल में बोलते हैं तुम्हारा लॉन्ग और रो एंड MySQL में बोलते हैं ब्लॉक और टेक्स्ट. In addition to the data type described above, following types are also used frequently in different programming language. So different programming language में और data type क्या क्या यूज होता है, decimal, PQ, exact numerical with precision P and scale S, that is decimal 5,2 is a number that has 3 digits before the decimal and 2 digits after the decimal. Then real में approximate numerical or multi-sub precision 7. Next is date. It will store years, month and day value. Time, store hour, minute and second value. Timestamp, stores years, month, day, hour, minute and second value. Array में a set of length and order collection of element and XML and stores XML data. So first one is your character data type का properties हम लोग पढ़ेंगे. Character data type is used to store character string value of fixed length. And second is the maximum number of character of data type can be equal to 255 characters. And third is it's 50% faster than worker and uses static memory allocation. Static memory allocation मतलब fixed memory allocation. You cannot increase or you cannot decrease the memory allocation. For character column, transaction of access trailing space from inserted value is performed silently regardless of the SQL mode. Next one is worker. It is used to store variable length of alphanumeric data type. The maximum this data type can hold up to 65,535 characters share for the row, and it's lower than character uses dynamic memory allocation for Bharkar column trailing space in excess of the column length and truncated prior to insertion, and a warning is generated regardless of the SQL mode in use. Bharkar values are not padded when they are stored. Trailing spaces are retained when values are stored and retained in confirmation of standard SQL. So in this video, in the next video, we'll discuss about relational database. Thank you.